Hello children, today we are going to start with chapter 6, that is the age of reorganization. So in this chapter we will study about the Ashoka's successor, right? So the last Mauryan emperor was, kaun the last Mauryan emperor? That is Brihadatta, and he was assassinated around 185 BC by the general Pushyamitra Shunga. This led to the breakup of empire. क्या होता है? Empire टूट जाता है. In this situation, we saw the emergence of new kingdom and these were early in Mauryan region. जो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर वो खत्म होने लग जाती हैं एंड दे आर ओपन टू इन्वेजन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. सो न्यू किंगडम फॉट विद ईच अदर फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल बाय पीसफुल मेथड, जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस जो बिटवीन नेबरिंग किंगडम्स था. यूज ऑफ फोर्स इन वॉरफेयर एंड इट नॉट वर्दी, they were constant wresting control over areas along the borders, right? With these political events, we see a lot of development in art, architecture, literature and enrich culture exchange. तो राइज ऑफ सुंगा, सुंगास का राइज होता है सेकंड सेंचुरी में, और जो पुष्पमित्र सुंगा थे, he was a last modern ruler and took over the throne. He was soon attacked by the Greek rulers from the west, but he was able to defeat them. पर उनको defeat करा उन्होंने, and जिससे क्या होता है? He believed in this policy and he performed Ashwamedh Yajan and ruled for 36 years and was succeed. अपने बेटे से succeed करते, that is Agnimitra. Where there were 10 Sunga rulers and the period witnessed revival practices. So in the modern period, art, education, philosophy and other art forms of learning flourished during this period. And यहाँ पे स्मॉल टेराकोटा इमेजेस, स्टोन स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं. एंड द सुंगा रूलर हेल्प टू एस्टैब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ रॉयल स्पॉन्सरशिप. द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द एम्पायर वाज अ वेरिएंट ऑफ ब्राह्मणी स्क्रिप्ट एंड द सुंगास वर इंपॉर्टेंट पैट्रॉन्स ऑफ कल्चर एट द टाइम. सम ऑफ देम वर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वर टॉट. तो आपके सतवाहन्स आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू पुराण अगर हम बात करें, जो सतवाहन्स थे इनको हम आंध्रास कहते थे. एंड द इंपॉर्टेंट सतवाहन रूलर वाज गौतमीपुत्र शत्रकर्ण. Right, he know more about the inscription composed by his mother Gautami Balsari, and the Satavahan king ruled called Lord of Dakshinipat, or the route leading to south, and the entire South India was called Dakshinipata. Women enjoyed a prominent position in the Satavahan society. Intelligent and educated women like Nankanika, Gautami Balsari, they play important role, and wealthy women held property in their own right. The Amravati sculpture depict women offering worship with men taking part in assemblies. They were even carved as having participated in religious discussion. So what happened? जो कैपिटल थी सतवाहन्स की वो थी पैठान और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में. They traded with the Roman Empire. Some of the coin bear figure and the Satvahans were responsible for construction of rock cut temple और जो monasteries थी, and Amravati is most famous Buddhist sculpture. छेदी डायनेस्टी की हम बात करें, ये प्रोमिनेंस थी इन कलिंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. छेदी डायनेस्टी इज नोन फॉर किंग खैरवाल हु रिगेन डॉक्यूमेंटेड इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. यहाँ ये मिलिट्री कैंपेन के लिए जाने जाते हैं. ये फॉलोअर्स हैं जैनिज्म के. ही समटाइम्स कॉल्ड मॉन्क किंग भिक्षुजा एज मेंशन इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. और ये आपको उदयगिरी नियर भुवनेश्वर देखने को मिलता है. एंड द खांदगिरी और उदयगिरी केव्स आर रॉक कट मोनेस्ट्रीज, और यहाँ पे आपको फॉलोअर्स ऑफ ये जैनिज्म हैं, राइट. फिर किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ द साउथ इन इंडिया सदर्न रीजन पीरियड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी सॉ अ प्रोमिनेंस इन 3 पावरफुल किंगडम. कौन कौन से थे? चेरास थे, चोलास थे और आपके पांड्यास थे, राइट. संगम एज की बात करें, तमिल में, तमिल रीजन ऑफ इन साउथ इंडिया, Tamilakalam lies south of the Krishna river. It ruled by the 3 powerful dynasties. कौन कौन सी थी? वही आपको मैंने बताया, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. एंड सबसे अगर हम सतवाहनास की बात करें, they were also very powerful in the southern part of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. And the period of more than 450 years, we come to know about his history from Sangam text. फिर है Tamilakalam. When the Mauryans and the Kushans were ruling North India, South India was ruled by Satvahans, mainly ruled over a part of Maharashtra, Karnataka, and Cheras, Cholas and Pandyas rule over the region of South. राइट, इसको हम तमिलाकलम कहते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो लैंग्वेज स्पोकन है वो कौन सी है? तमिल है. फिर आता है रूलर ऑफ तमिलाकलम, चेरास, चोलास, पांड्यास. ये क्या थे? मूवेंडर थे. और जो संगम लिटरेचर थी, इट वाज मेंशन इन मूवेंडर. वेंडर मींस किंग और रूलर्स, और मूवेंदर का मतलब क्या होता है? 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ तमिलाकलम हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया.
चोलास किंगडम आर सिचुएटेड बिटवीन पेनार एंड वेलोर रिवर, इसको हम चोला मंडलम कहते हैं, जिसका पॉलिटिकल सेंटर था वो कहाँ था, उरियूर में था। और ये किसके लिए फेमस था, कॉटन ट्रेड के लिए। एंड ही कॉन्क्वर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड फॉर अबाउट 50 years। और अनदर इंपॉर्टेंट चोला रूलर कौन थे आपके, करिकाला, राइट। यहाँ पे आपके 12,000 स्लेव्स थे जिनको हम श्रीलंका से लेके आए थे। एंड द न्यू कैपिटल ऑफ चोला एट पुहार वाज कॉल्ड कावेरी पट्टनम, राइट। So it was a great center of trade and commerce, and the period of Chola power declined rapidly, and it is fourth during the long interval. Other regional powers such as Cheras and Pandyas rose to prominence in South India. Then we have Cheras. So the Cheras were also known as Kerala Putras, ruled over present-day Kerala and some part of Tamil Nadu, right? They are Sengtuvan was the most famous and distinguished among them. He maintained a strong naval force, and Cheran Sengtuvan captured Roman fleet. और ये किसके साथ ट्रेड करते हैं, रोम और इजिप्ट के साथ। लाइफ ऑफ द पीपल, दे वर रूल्ड बाय चीफ्स, दे वर एंगेज्ड एग्रीकल्चर वर्क करते थे, एग्रीकल्चर वाला। एंड दे लिव्ड इन टाउन्स इन कोस्टल एरियाज। द पीपल ऑफ दिस किंगडम, जो लोग थे इस किंगडम्स के, दे वर फॉन्ड ऑफ अम्यूजमेंट। आफ्टर डेज वर्क दे एंजॉयड म्यूजिक, डांस एंड reciting poetry, and they were indulged in gambling. Musical instruments जैसे drums, flutes, pipes, they were used. Now Pandyas, they ruled over the territory of modern district of Madurai and Tiruvali, part of Trichupuli and Travancore region. Capital जो थी उसको मदुराई कहते हैं। Megasthenes gives us information about Pandyas in his book. कौन सी बुक में देते हैं, बुक का नाम है इंडिका। इन्होंने क्या फाउंड करा, दैट वुमेन हु मेंटेन अ लार्ज आर्मी, पांड्यास कैरिड अ ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज। ये फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं at the port of Korkai and Kayal, right? And they were rich. Megasthenes says that Pandya's kingdom was known for, किसके लिए जाने जाते हैं, pearls के लिए, और exported them to Romans. The Pandyan king respected Brahmins and performed Vedic sacrifice, and he was patron of literature. अब इन्वेजन होता है कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से, इंडो ग्रीक आते हैं। Many foreigners invaded North India during, among the first invader was Greek. He ruled Bactria, North Afghanistan, and he settled in India, known for Indo-Greeks, and most famous जो है वो है आपके Meander, that is Melinda. Indo-Greek rule is very important in the history of India. The first ruler of India issued coin and bearing portrait of king. इसको हम न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट आता है, इसको हम गंधार आर्ट कहते हैं। We have Shakas after Indo-Greek. Shakas invaded India. 5 branches of Shakas were Rudradaman. He repaired old Sudarshan Lake at Kathiawar. The large irrigation lake was built during the rule of Mauryas. We have Rudradaman, also a great lover of Sanskrit literature. We have Parthians. Shakas followed by the Parthians. They came to India from Iran. They ruled over a small portion of northwestern India. सबसे important जो Parthian ruler था वो क्या थे, Gondopharans. Vinay Kushans. So Parthians were followed by Kushans. Kushans came to India through Afghanistan. They established mighty empire over there as Bihar. The main capital of Kushan was Purushpura, Peshawar, जो पाकिस्तान में, मथुरा उत्तर प्रदेश. The important Kushan rulers were Cutfish first, second, and Kanik started new era, जिसे हम शाका एरा कहते हैं. And he encouraged what? Art and literature. Art और literature दोनों को encourage करा. Ashwa Ghosh, a famous Sanskrit scholar, lived in the court of Kanish and wrote Buddha Charitra, biography of Buddha, and Saundra Nanda, he attained Buddhist council organized by Kanish, Vashumitra Chakra, Nagarjuna, and other scholars. Chakra wrote a book called Chakra Samhita that described various parts and herbs used in medicines. The Kushans patronized Gandhar school of art, developed as a result an intermingling of Indian and foreign ideas. Right? So gradually क्या होता है, जो गंधार स्टाइल था वो स्प्रेड हो जाता है मथुरा में, and many of these sculptures were made of red stone found in this region, well known for Mathura sculptures. Kushans were known for the beautiful gold and copper coins. फिर story of the Silk Route. So India came to in contact with distant land through trade. The Silk Route was most important trade route. It was called silk because of the main item traded through this route. Right? The Chinese say they made first silk and then the trader followed route to carry out silk. There were several branches of this route. The main branch जो थी वो आपकी चाइना से स्टार्ट करती है और रन करती है अक्रॉस रोमन एम्पायर एंड इंडियन ट्रेडर्स. राइट? तो यहाँ पे इन रिटर्न वो क्या उनको वापस में मिलता था, आपका ग्लास, कॉपर, टिन एंड वुड. Many rulers tried to have control over Silk Route. They protected the trader from attack of pirates and the trader gave them a part of their profit. And it was profitable for both. दोनों के लिए profitable था.
right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.